A very happy morning to all my dear children. Welcome back to your computer class. Dear children, we were studying your chapter number 2, that is more on MS Windows 10. Today we will be moving to part 5 of this chapter and we will be completing the chapter as well. So are you all ready? Yes? So dear children, today our last topic is virtual desktops. Okay, now what are virtual desktop? Now on a laptop or a computer when we are running two or more applications, ठीक है कि हम कभी कभार पावर पॉइंट भी रन कर रहे हैं, वर्ड भी रन कर रहे हैं, तो एक साथ हम बहुत सारी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं. सो वी टू स्विच ऑन बिटवीन द एप्लीकेशंस वो ईजी कैसे बनता है? बाय क्रिएटिंग द वर्चुअल डेस्कटॉप. ओके, बाय इनेबलिंग द वर्चुअल डेस्कटॉप. दैट मीन्स कि हम एक न्यू डेस्कटॉप बनाएंगे. ओके, नाउ हाउ कैन यू क्रिएट दैट? लेट अस सी. नाउ सी डियर किड्स, we will move on to our desktop. Yes, on the desktop, as you can see here on the task bar, you are having task view. See on the bottom, dear children. Yes, can you see my cursor? Yes, it is having task view. So you will click on it. Okay, आप उस पर click करोगे. Then as you can see here, new desktop is being created. ओके हम यहाँ पे प्लस साइन करेंगे तो ऑलरेडी एक और डेस्कटॉप क्रिएट हो जाएगा. ओके, डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 और डेस्कटॉप 3. ओके, सो करंटली हम किस पे काम कर रहे हैं? डेस्कटॉप 2 पे काम कर रहे हैं. कौन से पे? डेस्कटॉप 2. सो यू कैन क्रिएट अ न्यू डेस्कटॉप. ओके, ये हो गया हमारा डेस्कटॉप 4. देन इस डेस्कटॉप में हम कोई भी यहाँ से आप एप्लीकेशंस देख सकते हो. ये सारी एप्लीकेशंस मेरे लैपटॉप में अभी ऑन है. क्या है? ऑन है. जैसे कि आपके स्मार्टफोन्स में रिसेंट एप्लीकेशंस होती हैं, है ना, आप उनको ऐड करते हो, रिमूव करते हो. इन द सेम वे डियर चिल्ड्रन, ठीक है. अभी मैं इस एप्लीकेशन को ड्रैग करूँगी. ओके, आई विल जस्ट यूज इट. सो वी आर ऑन द डेस्कटॉप नंबर 4. हम किस पे आ गए? हमारे डेस्कटॉप नंबर 4 पे आ गए हैं. ओके, लेट अस स्विच ऑन टू आवर डेस्कटॉप नंबर 2. ओके, सी अगेन वी आर बैक ऑन आवर डेस्कटॉप. ओके, this is your desktop number 2. Then if you again want to switch on, you will just click on the task view, and if you want to close any desktop, फॉर सपोज डेस्कटॉप 3 पे आपको अभी कोई भी काम नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको बेटा क्लोज बटन दिया हुआ है. सी हियर ऑन द टॉप, यू विल जस्ट क्लिक ऑन इट. ठीक है, आप जस्ट उस पर क्लिक करोगे. एंड न्यू डेस्कटॉप आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस साइन. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? एज यू कैन सी ये सारी एप्लीकेशंस मेरे अभी लैपटॉप में ऑन है, तो मैं इन सारी एप्लीकेशंस को एक एक डेस्कटॉप में रख सकती हूँ, सो दैट आई कैन स्विच ओवर द एप्लीकेशंस वेरी इजीली. ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर सेकेंड डेस्कटॉप. यस, ओके, so let us move on again to our PPT what you are having. Now to close the desktop, open the task view and click on close in the upper right corner as ma'am has shown you. Okay, this is very easy. You can also try it at your homes using the laptops and computer. This is mostly similar to your smartphones. जैसे ही आपके स्मार्टफोन्स में बेटा रिसेंट एप्लीकेशंस होती हैं, आप कैसे स्विच ऑन करते हो एप्लीकेशंस में, इन द सेम वे यू कैन डू दैट इन योर लैपटॉप्स एंड computers. Understood? Clear? Next is your application based question. Now what are application based question? Let us see. Chahal has created a number of files on her school project and stored them on a desktop. उसने बहुत सारी फाइल्स क्रिएट की हैं और डेस्कटॉप पे स्टोर किया है. She wants to keep all the relevant project files in a folder, but she has forgotten the way to create a new folder. Help her to create a new folder. Come on, let us help her. Okay, so we will go on to our desktop. Yes, this is your desktop. Okay, now on the desktop we want to create a new folder.
So how you can create it? मैम ने आपको बताया था. You can right click anywhere. Then here you are having the option of new. You will click on it and then you will click on this new folder. Okay, understood? Again I will show you. Right click anywhere on the desktop, click on new and click on new folder. Yes, so two new folders have been created for keeping the files. Let us see the next application based question. Second one, Atul has created a folder for his project and saved it with a file name, but now he wants to rename it. अभी हमको folder को rename करना है. So for suppose take this folder, that is new folder 4. So हम कैसे rename करेंगे? Okay, right click on that folder. Here you are having the option of rename. नीचे से second last. See here you are having the option of rename. Okay, so you can give here the name, project or computer, whatever name you want to keep. Understood? Then just press the enter key. Again I will show you beta. Just right click on any folder, click on rename, then you can rename your folder with any name and then just press the enter key. Okay, so this folder has been already been created. No, I don't want to like merge that folder. Okay, is it clear? Understood? Let us see the next question. High order thinking skills. What is the difference between copying a file and moving a file? क्या difference होता है? Copying means उसका duplicate बनाना, है ना? हमने पढ़ा है last हमारे previous video lessons में. Copying a files means उसका duplicate बनाना. But moving a file means cut and paste to move a file. Okay, I will show you the difference once again. Let us see. Okay, now as you can see, this is the document on my desktop. Okay, I will right click on it. Then here I am having the option of copy. As you can see my cursor, I will click on copy. Then I will again click anywhere to paste it. Okay, so ये एक और बार paste हो गई. Now what does the cut and paste means? Again, just right click on any of the file. You are having the option of cut. So आप जैसे ही देखते हो वहाँ से cut का मैंने option लगाया. I will then paste it. See, वहाँ से वो वाली file remove हो गई and यहाँ पे आ गई. Copying a file and moving a file. This is the difference. Understood? Clear? Let us see the next one. What you are having? Okay, worksheet 2 in your textbook, dear kids. What you have to do, you have to just match the following. Okay, in your previous video lesson I have given you some homework to write down the short forms of all these options: copy, paste, cut. I hope you have written it and you have learnt it as well. Okay, so you will solve this on your own. Okay, ma'am will not help you because in your previous video lesson we have already seen it and you have learnt it as well, dear kids. Understood? These are the match the following which you have to do in the textbook itself. Okay, on worksheet number 2. Understood? Now let us see the notes which I am going to send to you with this video lesson. Now see, dear kids, these are your notes of second chapter, that is more on MS Windows 10. Pay attention to the note here. Write question 1 and 2 in your textbook and write question 3 and 4 in your notebook. That means multiple choice question and true or false आपको textbook में ही लिखने हैं, answers उसके textbook में ही होने चाहिए, and question 3 and 4, that is fill in the blanks and answer the following in your notebook. Don't forget to copy the questions from the textbook. Understood? Clear? As you can see here, dear children, here ma'am has given you the option. Okay, you can write and learn any way. Okay,
here there are two ways are given to you to change the screen saver. ओके, दो आपको आंसर्स दिए हुए हैं, उसमें से जो आपको इजी लगे वही लर्न करो, वही नोटबुक में लिखना. ओके, स्क्रीन सेवर चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो आप वही लर्न करना और वही नोटबुक में लिखना. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर डियर चिल्ड्रन? इन द सेम वे यू आर हैविंग टू ऑप्शंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में. अंडरस्टूड? सो आप दोनों में से कोई भी एक वे ले सकते हो and you can write and learn that way only. You have to write and learn that way. Understood? दोनों एक बार रीड करो, जो आपको easy लगे वो आप करना. Is it clear dear children? Understood very well. I hope you are clear with this chapter. If you are having any doubts in the practical, we will solve it in our online sessions. Okay, so be ready with your doubts. Okay, just note down your doubts and let us solve in the online classes regarding all the practicals of the second chapter. Understood? Now we will meet next time with something more interesting in computer. Till then, bye bye all. God bless you and take care.